director of MBA program. So, aap sir? Myself Subhash, HOD Mechanical at GP Panchkula. Oh wow, great. You are my neighbor then. Yes. Great. It's in sector 27, na? 26. 26. Near Rogers. Yes. Earlier, I'm also, I have been the director of NIFT, Mohali. So earlier, my campus was in your this thing. Yes, now I at 22. They have shifted it to their parent department. Sir, aap? I am Sanjeev from GP Slora, senior lecturer. Which place? Rajpur, Slora, senior lecturer. No, which place? Location? Rajpur, Slora, sir. Near Yamunanagar. Near Yam. Okay. Hanji, ma'am? My name is Sanjeev and I am from GP Panchkula in Palwal district. Palwal. Oh. So you come under that technical university? No. Government Polytechnic. Polytechnics come under the Board of Technical Education. Yes. Oh. New appointment हुई है ना, Sir, aap? Sir, my name is Gaurav Kumar. I am lecturer at Government Polytechnic Mandi Adampur, which is in Hisar. Adampur has been the constituency of Chaudhary Bhajan Lal ji. Bhajan Lal. Yes, sir. Sir, I am Praveen Kumar, lecturer at City Government Polytechnic, Sirsa. Sir, aap? My name is Anupam Shukla. Little louder, Hanji. So my name is Anupam Shukla and I am from Government Polytechnic College, Hathni Kund, lecturer in electrical. Hathni Kund. ये कहाँ है सर? यमुनानगर के थोड़ा सा. सर राजपुर से 30 किलोमीटर दूर है. Sir, aap? Sir, my name is Prateek Jain and Sir, you have to be little louder in my class, right? Okay. My name is Prateek Jain and recently I joined as a lecturer in civil engineering at Polytechnic Sirsa. जी सर. सर आप इधर आ जाइए ना. Why you hide behind the curtains? So my name is Abhay Tiwari. I have joined in mechanical engineering department at Government Polytechnic. Sirsa. Acha, so that means most of us are from Haryana. Yes, In Every- physical mode, We most of joined in Haryana, but I am basically from Bihar. No. Matlab, at this moment we are all. Sir, आप कहाँ से सर? Myself from Sharma. I am senior lecturer at Government Polytechnic, Manesar. माने सर. Oh. I think we can start, or should we wait? No, sir, we can start because time ho gaya. So, very good morning to all the participants present here as well as connected online. So, kindly please confirm if I am audible to all of you who are connected online. Yes, sir. It's audible. Thank you so much, sir. So, a very warm welcome to all the participants in the third day of this course on institutional management and academic administration. And for the first technical session, we have with us Dr. Sanjeev Kumar Sharma, sir. Dr. Sanjeev Kumar Sharma, sir, is Director, Internal Quality Assurance Cell, Punjab University, Coordinator, Swami Vivekananda Center for Interdisciplinary Studies, and Professor at the University Institute of Applied Management Sciences, Punjab University, Chandigarh. Sir has also served as Director in UI AMS from 2010 to 2017. Sir attained his doctorate degree from Punjab University and MBA from Banaras Hindu University with a gold medal. In addition to MSc Honours, he also holds a LLB degree. He is also an alumni of IIM Ahmedabad, where he earned a certification of faculty development program. With an exemplary teaching experience of more than 28 years now, Sir has published many papers in national and international journals like Indian Journal of Public Administration, Vision, the Journal of Business Perspective, Prabandhan, Indian Journal of Management, to name a few. His areas of specialization are strategic management, marketing, international business, and many more. Sir has guided more than 50 doctorate and 5 postdoctoral researchers and is member of postgraduate board of studies of 5 universities and on the editorial board of 5 journals. Sir firmly believes in the idea of development of managerial skills and talents in management graduates so that they can become socially responsible and ethically oriented business tycoons. So I take this golden opportunity to invite such an eminent expert amongst us. So we welcome you, Sanjeev, sir. Thank Hope you. to learn from your extensive knowledge and experience. Thank you, my friend. Mark my words, he's my future. Honestly, he's so immaculate, well planned. I thought, if at such a young age he can do so well, so God bless him. Okay, friends, since it is an blended mode of a workshop, my request to my participants who have joined online, you can either use the chat box here or better still, if you can just raise your hands and let it be an interactive session. Let everybody gain. Okay. So
And I will be very happy if most of you can switch on your cameras so that at least I know that you are there, right? Otherwise, physically we are, but emotionally and psychologically we may be somewhere else. So it is better if we interact. And since I'm just one of you, whatever I will share with you is based on as my friend mentioned, 30 years of teaching, right? Uh, and most of us, since most of us are with an engineering background, like you, I also have an engineering background. uh, I did my MSc in genetic engineering. At our time there was nothing like BE or BTech. अगर आप पुरानी डिग्रीज देखें तो हमें BSc मिलती थी, BSc engineering मिलती थी. So anyway, those are the things how education has evolved over a period of time. uh, Professor Vats is my dear friend, my senior, my mentor. He is my uh, godfather, so to say. Mm, this particular academic leadership program we developed somewhere around 2008. So in last 15 years, we must have conducted at least 75 such workshops. And it is one of the most reputed, most renowned, and most sought after training program. We do it once in a 6 months. साल में 2 बार ये academic leadership program करते हैं हम, Professor Vats, and he is kind enough to involve me. We don't do more, just because we want to have the best. And what is the purpose of this program? अगर आपने ये schedule इन्होंने आपको जो दिया होगा, अगर आपने note किया होगा, तो हम gradually आपको leadership positions के लिए train कर रहे हैं, right? We want, because another 5 years, 10 years, 15 years down the line, you will be heading the polytechnics, you will be heading the engineering departments, colleges, right? You will be bursars, you will be wardens and all that stuff. Okay. So why not impart in you certain academic leadership qualities so that when time comes, you are mature enough to understand what is your role and responsibility. So this is the whole workshop all about, right? So you must be interacting on time management, on stress management, on leadership, on group dynamics, on team building, all that stuff. Okay. So that is how this workshop has been developed. And this is, I think, the biggest contribution of my friend Professor Vats, because if these people have introduced him to you, he's not only a great human being, he's also a brilliant scholar, right? Look at his profile, you will be astonished, right? But he's a very, very down to earth type of a person. So this assignment which he has given to me is on how can we develop excellence by being excellent ourselves. Okay? So we start with the basic belief that all of us are good. How can we become excellent? ये मेरी एक बेसिक फिलोसफी, ये हमारा एक प्रोग्राम का शेड्यूल है. And I will be bilingual. In case you want, I can be trilingual also. I can start using little Punjabi, little Haryanvi also, because my upbringing has also been like that. Okay. So individuals, how they contribute to organizations and how organizations attain leadership in their institutions. That is the whole theme. और ये सारे के सारे में हम 2 aspects के ऊपर फोकस करेंगे. हमारा सोसाइटल रेलेवेंस और दूसरा हमारा एथिकल डायमेंशन. I think since ages, teachers are treated as role models, and we are no exception. Maybe 20 साल आप और मेरे में age difference है. It's okay, right? But the moment I entered, many of my friends who are on almost my age or just 5-6 years junior to me, they also stood up. Why? Not that they knew who I am, but they knew that somebody is there, he must be. So ये जो feeling है ना गुरु शिष्य परंपरा, ये भारत की बहुत बड़ी देन है. I will narrate 2 incidents just to bring home this point. Welcome my friends. I'm Sanjeev Sharma and I'm handling session on academic leadership. I do a lot of training programs abroad. बहुत करता हूँ. And I do a lot of training programs in France. And I'm sharing with you personal experience. I was doing a training program, afternoon time, 2:30. I was delivering lecture on stress among the teachers and the students. Stress level. क्योंकि that मेरा area ही human capital management है. तो
So I was delivering a session on stress management. One girl student raised a lazy hand like this. सुस्ती में होता है ना. So I thought she has a question. Normally यही perception होता है ना, कोई हाथ raise करे तो question होगा. You know what she said? She said, sir, at this moment you are the greatest stress. You have come to the class unprepared. Let's not waste each other's time. Now, please, by giving this example in the very beginning of my session, what I'm trying to highlight is, no doubt there is still Guru Shishya Parampara in India. We still regard the teacher, whether teacher has prepared for the lecture or not. But those days are not far off when they will also raise hands like this. And they will pose a question to you. They will pose a question to you. Sir, whatever you are teaching is already available through Google Baba. Give me something more. Am I right or not? And after this chat GPT, आप तो असाइनमेंट भी डाउनलोड कर लेंगे. So the relevance of teacher will change. He need not be now a teacher. He has to change his outlook as a mentor, not as a teacher. मानते हैं कि नहीं इस बात? You have to change. If you don't change, what will happen? You will become irrelevant. 17% of higher education in the country as on date is through distance education. Distance education. क्यों? एक तो बच्चा कह रहा है कि मैं नौकरी कर रहा हूं, पैसा कमा रहा हूं, तो मैं अपनी एजुकेशन फाइनेंस कर रहा हूं. एक रवैया ये है, एक सोच ये है जो हम पॉजिटिव सोचना चाहते हैं. दूसरा रवैया ये भी है कि सर मैं क्लास में जाके क्यों टाइम खराब करूंगा, डिग्री तो वही है ना. Am I right or wrong? So friends, as you go along, more and more peer pressures will be on you to stay relevant. मैं तो चलो आपको 1 घंटा 1.5 घंटा I will discuss something and then I'll go out. But these are the thoughts to ponder. सोचना. I will pose a question to you. अब इसको बड़े ध्यान से सुनिए question. And my friends online. Yes. I will pose a question. Should I teach what I know? Or should I teach what my students should know? मैं फिर repeat करता हूं. Should I teach what I know? Or should I teach what my students should know? What my students should know. है ना? Logical answer. कि मेरे स्टूडेंट को जो चाहिए वो मुझे उनको डिलीवर करना चाहिए. जब आप जोमेटो में भी फूड ऑर्डर करते हैं तो वो आपसे पूछता है भैया क्या खाना है ना. एंड व्हाट आर वी डूइंग? वी आर डिलीवरिंग इन द क्लास notes which we prepared 10 years back. गलत का? क्यों? Because that is what I know. So, will this remain relevant in future? No. No. So, that means we have to start from ourselves. सबसे पहले तो मुझे अपनी टीचिंग लर्निंग को चेंज करना पड़ेगा. 3 days back there was a AICT का एक सर्वे आया था that 28% seats in engineering colleges in C and D cities remain vacant. 1/4 सीटें इंजीनियरिंग कॉलेजेस सी और डी सिटी में खाली पड़ी हैं. मुझे पॉलिटेक्निक का हाल नहीं मालूम बट यही होगा उनका, इससे भी ज्यादा. Now tell me, if you see government is also in business, whether you like it or not, जो मर्जी कहते रहे हम सोशल सर्विस कर रहे हैं, everybody expects you to earn your own salary. There no free lunch. How long can government possibly support higher education? Right? So that means
To remain relevant, I must deliver what my student wants. And what does he want? He wants कि कोर्स के बाद मुझे अच्छी सी प्लेसमेंट लग जाए. एंड रिजल्ट तो यही है ना सर. हम भी तो इसलिए पढ़े कि नौकरी लग जाए. यही बच्चे का व्हाट इज रॉन्ग इन इट. दैट इज व्हाट इज हिज एक्सपेक्टेशन. And what is the vehicle? Vehicle is your teaching learning. Make him employable. How will you make him employable? Teach him what he needs in the industry. हमारे पास एक सिंपल सोल्यूशन क्या है? सर मेरे हाथ तो है ही नहीं, सिलेबस जो आया मैं वही पढ़ाऊंगा. Am I right? So we try to justify ourselves. Then what is the solution? Sir, syllabus is only an outline. How you deliver is equally important to what you deliver. So it is in this light that I've given you a background of what to expect in my next 1 hour. And I request to all of you, especially online and those who are here, to please share your experience, because your experience matters much more than mine. Because I will continue to, every new batch comes out with new ideas, fresh mind. So if you share something with us, we will try to prepare minutes and we'll try to circulate to our because polytechnic teachers normally we train every year around 4,000 teachers. At NITTR, 4,000 teachers are trained every year. Right? Out of them, around 2,000 are trained twice. So they attend at least 2 workshops. So 4,000 is our target. Sometimes we do 6,000, 7,000 also. So that means whatever information or knowledge you will share with us, we will, in such workshops, we will use that knowledge. We will share that knowledge. Best practices, how others are doing it, that can also. Okay. So with that background, sorry. Why academic leadership is important? हम क्यों academic leadership के ऊपर इतना focus कर रहे हैं? See, just look at the current scenario. Isn't it very volatile, very risky? It's very uncertain. कहाँ रशिया और यूक्रेन की लड़ाई हो रही है, कहाँ अमेरिका 18,000 किलोमीटर दूर. They have to change their policies. You understand? India has not taken any sides, but is also affected. दोनों sides इनके पास आ रही हैं, समझौता कराओ. So Prime Minister Modi has taken a leadership position. He says, wait, because strategically it is good for us that oil prices are down. आपने नोट किया 18 countries are now accepting Indian rupee for business. The dollar से दूर. So that means gradually India is occupying the leadership position. Strategically, very, very focused. With this G20 leadership, 66% of the world trade is through these G20 countries. And Prime Minister Modi is very clear. He wants that these G20 countries should accept Indian rupee. So big achievement. Now, why I am correlating with education? There is a reason. Sir, under WTO, there is an Washington Accord which says degrees and diplomas of member countries will be reciprocally accepted. जो मेरा ITI का डिप्लोमा है उसको कनाडा का कम्युनिटी कॉलेज को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तभी मैं उनके कोर्स को एक्सेप्ट करूंगा. You understand what I'm trying to? And especially in Haryana, there is an HSIIDC, Haryana State Industrial. You know what they have done last week? 20 senior IAS officers were assigned 5 countries each. कि इन कंट्रीज की प्रोफाइल देखो कहां हमारा बच्चा जाके जॉब कर सकता. आपने पढ़ा हो, शायद पढ़ा होगा. इट्स अ वंडरफुल इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट. So that means if my polytechnics, if my engineering colleges train my students on these skills which are required in, say, Hungary, which are required in, say, Czechoslovakia,
and my students get placement there, not only they will get a placement, they will also bring a lot of foreign currency back to India. So now link these two things together. One, there is now reciprocal recognition of degrees and diplomas. But it has to be according to certain international norms. And second, mobility of students, mobility of teachers. अगर स्टूडेंट मूव कर सकते हैं तो टीचर क्यों नहीं कर सकते भाई? Am I clear? So that is why I said this present scenario of education is known as VUCA, very volatile. अब जब से न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020, राइट, आपने नोट किया, नो एंट्री एंड एग्जिट बैरियर. 3 साल का डिप्लोमा है, बच्चा 2 साल के बाद निकल जाएगा, कोई बात नहीं, 4 साल बाद फिर वापस आ जाए. एक स्ट्रीम में डिप्लोमा कर रहा है, उसको पसंद नहीं आ रहा, कहता मैंने म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स भी पढ़ने हैं तो पढ़ लो, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट भी पढ़ लो. सो दैट मीन्स अब वो जो पुराना जमाना था ना कि बच्चा कह रहा है मैंने तो इलेक्ट्रॉनिक्स में एडमिशन ले लिया, मेरे लास्ट तक इलेक्ट्रॉनिक्स ही पढ़ना पड़ेगा और कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा, वो दिन गए. बीच में वो कह रहा है मुझे शेक्सपियर का नॉवल पढ़ना, पढ़ लो, तो वही पढ़ ले. वो कह रहा है मैंने थोड़ा सा मैनेजमेंट पढ़ना है, वो भी पढ़ो. सो दैट मीन्स अगर स्टूडेंट हरफन मौला बन रहा है तो टीचर को भी हरफन मौला बनना पड़ेगा. सर ये ना सोचिए मैं हवा में बातें कर रहा हूं, पढ़ लीजिए. एंड दिस इज टू बी इंप्लीमेंटेड फ्रॉम 2024, अगले साल से. 70-20-10 प्रिंसिपल दे दिया न्यू एजुकेशन पॉलिसी. 70% कोर पढ़ोगे आप, अगर आप सिविल के हो तो सिविल पढ़ो 70%, 20% है लाइट पढ़ो. सिविल के लाइट जो भी हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी हो सकता है, मैकेनिकल भी हो सकता है, इंस्ट्रूमेंटेशन भी हो सकता है, और 10 आपकी मर्जी, जो मर्जी, जहां से मर्जी, म्यूजिक पढ़ना है, डांस पढ़ना है, जो मर्जी, सिंगिंग करनी है वो करो. अब आप कहेंगे वो टीचर कहां से आएंगे इनको पढ़ाने के लिए? कोई जरूरत नहीं है टीचर्स की, बिकॉज सर्टन वेल डिफाइंड कोर्सेज आर अवेलेबल ऑन मूक्स, स्वयं प्लेटफॉर्म पे. बच्चा अपने आप को रजिस्टर करता है, 300 या 500 रुपए का रेट है, वहां से लेक्चर डाउनलोड करता है, पढ़ता है, उनका ऑनलाइन पेपर देता है. पेपर देने के बाद उसका जो सर्टिफिकेशन आता है वो आपके बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन को भेज दिया जाएगा कि इस बच्चे ने ये वाला पेपर इन 60 घंटे का वर्क पूरा करके ये ग्रेड पाया, जो आप अपनी मार्कशीट्स में इंसर्ट करो. इतना फ्लेक्सिबिलिटी. एज का कोई मिनिमम क्राइटेरिया नहीं है, मैक्सिमम क्राइटेरिया नहीं है. कोर्स स्ट्रक्चर का कोई मैक्सिमम मिनिमम क्राइटेरिया नहीं है. कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ना है ये कोई क्राइटेरिया नहीं है. 30-40 सपोज आपके 40 पेपर्स का आपका पॉलिटेक्निक है, 20 आपसे पढ़ेगा, 10 वो इग्नू से पढ़ेगा, 5 वो उस्मानिया यूनिवर्सिटी से पढ़ेगा, 4 आपका CDLU सिरसा से पढ़ेगा, 1 आपका कुरुक्षेत्र से पढ़ेगा, पढ़ ले. ये सोच जा रही है एजुकेशन. कितना दिमाग लगा हुआ इसके ऊपर, छोटी छोटी चीजें डिसाइड करने. that is why it is said new education policy is revolutionary. शुरू में प्रॉब्लम्स आएंगी हमें, एग्री, स्पेशली आप जैसे टीचर्स को, क्योंकि आपकी क्लास में एक तो वो बच्चा होगा जो फाइनल ईयर का होगा, एक कोई दूसरी ब्रांच का सेकंड ईयर का आगे भी आपके ऑप्शन ले लेगा पेपर में, आपको पढ़ाना पड़ेगा उसको. दैट विल क्रिएट प्रॉब्लम्स इन द बिगिनिंग. तो तभी तो अब रोल ऑफ अ टीचर हैज मूव्ड अवे फ्रॉम टीचिंग टू फैसिलिटेशन एंड मेंटरशिप. पहले जैसे ट्रेनिंग वाज फॉर 3 months, नाउ दे हैव मेड इट इनटू 3 months प्लस 3 months, दो बार, हर साल के बाद उसको 8 हफ्ते की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी पॉलिटेक्निक एंड इंजीनियरिंग. तो जो पहले 2 महीने ऑफ होते थे ना हमारे मई जून में, उसमें भी हमारी अब इन्वॉल्वमेंट. दैट इज हाउ एजुकेशन. ओके, yes sir, any comment? Sorry, I have been speaking most of the time. Just anything you want to add. Sir, isn't it jack of all and master of none? देखिए सर, ये एक जो आपने कहा, एक तो वो नजरिया है कि भैया सब कुछ पढ़ लेगा, थोड़ा थोड़ा आता उसको कुछ नहीं होगा. एक तो एक ये. दूसरा इसका एक और साइड भी ये है
कि उसका जो पैशन है, जो वो करना चाहता है वो तो कर पाएगा ना, उसका जो इंटरेस्ट है। पेरेंट्स के प्रेशर के साथ उसने सिविल डिप्लोमा कर लिया, है ना, पेरेंट्स का प्रेशर था, दोस्तों का प्रेशर था, जॉब सिनेरियो ऐसा था, उसको लगा यहाँ नौकरियां मिल जाएंगे, सिविल में बीटेक कर लिया या डिप्लोमा कर लिया, पर दिमाग में तो उसका अभी भी म्यूजिक चल रहा है ना। दूसरी बात, जब आपको अपने हुनर को किसी भी स्टेज पे ऐड करने की फ्लेक्सिबिलिटी होगी तो आप अपना हुनर चमकाएंगे। आपने सिविल इंजीनियरिंग कर लिया, डिप्लोमा कर लिया, आपको लगा नहीं यार इसमें ये चीजें भी ऐड होनी चाहिए थी, वो ऐड करेंगे। फिर इंडस्ट्री वाला कहता है भाई तूने इतना कुछ पढ़ लिया है, मुझे तो इस नौकरी के लिए ये वाला डिप्लोमा भी चाहिए, ये वाला वेल्डिंग भी आनी चाहिए आपको। तो आप कहते कोई बात नहीं, मैं ऑनलाइन वेल्डिंग ज्वाइन कोर्स कर लूंगा। सो सर मुझे ये लग रहा है कि जैसे जैसे आप अपनी नॉलेज ऐड करोगे इट विल सर्टेनली ब्रॉडन योर हॉरिजन। और सर देखिए आज से 5 साल बाद अब नोट कर लो, मूवमेंट विल बी मोर टुवर्ड्स वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। वोकेशनल एजुकेशन विल बी मोर इंपॉर्टेंट देन क्लासिकल एजुकेशन। जो पहले बच्चे एमए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस, बहुत अच्छे सब्जेक्ट्स हैं, वंडरफुल, बट दीज हैव वेरी लेस जॉब एवेन्यूज। अब बच्चा क्या करेगा, इन कोर्सेज के अंदर ही कुछ कंपोनेंट स्किल के इंपार्ट करेगा, ब्लेंडिंग करेगा, ये पक्की बात है, बिकॉज नाउ ही विल हैव एन ऑप्शन टू स्टडी एनी पेपर विच ही वांट्स। तो सर ये तो एक नजरिया आपका है, दूसरा नजरिया मेरा है कि उसको इतना ज्यादा हॉरिजन ब्रॉड हो जाएंगे उसके कि विल नॉट ओनली हैव जॉब बट सी प्राइम मिनिस्टर मोदी की 9 स्कीम्स इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट स्कीम तो मेरे हिसाब से मुद्रा है। 10 लाख रुपया विदाउट एनी गारंटी, विदाउट एनी श्योरिटी इज अवेलेबल टू यू टू स्टार्ट योर बिजनेस। अब आप मुद्रा अकेले तो चलेगी नहीं, है ना, ये स्कीम अकेले तो चलेगी नहीं, तो इसको सप्लीमेंट करने के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने दूसरी स्कीम लॉन्च कर दी, स्किल इंडिया। अगर भाई हुनर होगा तभी तो पैसे का यूटिलाइज करोगे, एम आई राइट? हुनर। फिर छोटा आसामी है, छोटा बिजनेस है, मार्केट कहां से लाएगा? सो इसको हेल्प करने के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी की तीसरी बड़ी मेक इन इंडिया। भाई अगर इंडिया में कार मैन्युफैक्चर हो रही है, उसके स्पेयर पार्ट्स भी इंडिया में मिल रहे हैं, तो छोटे एंसिलरी इंडस्ट्रीज ही बेनिफिट होंगी ना। डोंट लुक एट दीज थ्री थिंग्स सेपरेटली, लुक एट देम एज अ बास्केट। स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, मुद्रा स्कीम, और चौथा उससे भी बड़ा। आपको पता है इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा फिनटेक इकोनॉमी है। दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रेडिंग अगर पैसे की होती है तो इंडिया में होती है थ्रू डिजिटल करेंसी। हम सोचते हैं ना अमेरिका सब कुछ कार्ड्स के साथ चलता है, आपको पता है कार्ड में पेमेंट लगती है। बेटा डिजिटल इकोनॉमी इज ऑलमोस्ट फ्री, 0.4 इज द प्रोसेसिंग कॉस्ट। क्रेडिट कार्ड आप यूज करते हो तो 1.8% प्रोसेसिंग कॉस्ट है, 2% लगता है आपका क्रेडिट कार्ड यूज करने में, और आप रुपए यूज करते हो ना, रुपए का ऐप, इट इज 0.4% ओनली। इंडिया इज बिकमिंग वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फिनटेक इकोनॉमी, डिजिटल करेंसी सबसे बड़ा बनने का। By 2025 India will be the largest single digital economy, and by 2030 India will be the 4th largest world economy. अभी तो 5th में है। Now link these things together। और ये सर ये आएगा कहां से? लोग ये ट्रेनिंग करने वाले आएंगे कहां से? इंजीनियरिंग कॉलेजेस से या पॉलिटेक्निक से? दोनों में बहुत फर्क है। इंजीनियरिंग कॉलेजेस के जो बच्चे हैं इनवेरिएबली वो मास्टर्स करने बाहर चले जाते हैं या वो इंडस्ट्री में पोजीशंस पे चले जाते हैं, बट the real backbone of Indian economy is the polytechnic, because they train people to work at the grassroots level, at the shop floor. That is why जितनी मर्जी गवर्नमेंट की पॉलिसीज हो, हमेशा उनका एक कॉमन डिनोमिनेटर होता है, they always want to strengthen the polytechnics, because उनको पता है जॉब सिनेरियो यहीं से क्रिएट होगा। फैक्ट है, पढ़ के देख लीजिए, कोई रिकॉर्ड निकाल लीजिए, राइट फ्रॉम 1948 first policy till 1956 second policy, industrial revolution policy, industrial policy, सभी में focus is on polytechnics, and this is also the focus of the new education policy,
vocationalization of education. So, हमारा role and relevance will never be reduced. Nature of our relevance will change. Nature of our profile will change. We may no longer be required to do classroom teaching. We may be required more to do practical orientation in the class. Okay. Yes, my friends, any questions on through my online participants? Sir, I'm Sunil Kumar Saroj from Government Polytechnic Bareilly. सर मेरा क्वेश्चन है कि क्या कुछ ऐसा सर्वे हुआ है गवर्नमेंट के द्वारा या किसी और एजेंसी द्वारा जिसमें ये पता किया गया हो कि हमारे जो बच्चे हैं उनको वो 14 ईयर ओल्ड, नॉर्मली हमारे यहाँ जो बच्चे आते हैं उनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन हाई स्कूल होती है, और जिस तरह का सोशल स्ट्रक्चर हमारा है उस हिसाब से क्या 14 ईयर ओल्ड स्टूडेंट या एक जो बच्चा है वो इस तरह की एबिलिटी रखता है कि वो चूज कर सके कि मुझे किधर जाना है? क्योंकि हमारा सोशल स्ट्रक्चर नॉर्मली क्या है कि हम बच्चों को स्पून फीडिंग कराते हैं कि बेटा तुम्हें ये करना है, वो करना है, ऐसे रहो वैसे रहो, यहाँ मत जाओ यहाँ मत आओ, मतलब पेरेंट्स का इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा रहता है। तो इस जगह पे क्या बच्चा इस पोजीशन में होता है कि वो डिसाइड कर सके कि नहीं जी मुझे तो 2 साल ये करना है, फिर 1 साल मुझे ये करना है? तो इस तरह की चीजों पे क्या कुछ हम लोगों ने पहले कुछ निष्कर्ष निकाले हैं या फिर जस्ट एक एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू हम चेंज करना चाह रहे हैं? See, will anybody add? Anybody will like to add to respond to Ratinder? Yes, ma'am. Ratinder Kaur, ma'am, you want to say something on this aspect? You have raised hands, huh? Yes, Sunil Kumar ji. Hello, Ratinder, ma'am. Hello. Are you? Please unmute, ma'am. Ratinder Kaur, ma'am. Okay. Ratinder ma'am, if you want to ask any question, kindly please unmute. I think, sir, she might have raised. Okay. She's unable to. Ratinder ma'am, you can write it in the chat box. Okay. Yes, ma'am. It's okay, ma'am. It's okay. Yes, anybody will like to respond to what Sunil ji said? I think ये क्वेश्चन रेलेवेंट है, बट इसके साथ एक सप्लीमेंट मैं और करना चाहूंगा इसी बात पे ही। जी, सर थोड़ा सा आगे कर लीजिए। Yeah, I think it's audible. The point is that like जो अभी as he said के 14 years की एज में या 15 years की एज में when he enters into polytechnic systems, so he may not have that kind of maturity. ये thought process है कि उसको decide करना है कि अपने streams, हालांकि हम ये भी point भी है कि the students are very very intelligent now and they are well equipped with the technology and they very well decide themselves with the help of the mentor also. But इसी के साथ एक दूसरा perspective हमारे education system में आ रहा है, ये जो insecurity है students के बीच में, और उस इनसिक्योरिटी की वजह से हम लोग नॉर्दर्न इंडिया में तो स्पेशली फेस कर रहे हैं, हरियाणा में, पंजाब में एक लार्ज चंक ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो माइग्रेट कर रहा है टुवर्ड्स लेबर क्लास इनटू ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और ब्ला ब्ला ब्ला, यू नेम द कंट्री, एंड दे आर गोइंग थ्रू इलीगल काइंड ऑफ रूट। और हमारे पास इवन जो स्टूडेंट्स हैं वो लोकल स्टूडेंट है ही नहीं हमारे पास। अगर हम इसको अप्लाई देखा जाए तो वी हैव स्टूडेंट्स, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम बिहार, फ्रॉम नेपाल, फ्रॉम यूपी, फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, वेयर दे फाइंड दैट के इस तरह की क्वालिफिकेशन जो है वो यहाँ पे हमें अवेलेबल है चीपर कॉस्ट पे बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट सिस्टम, दैट्स इट। सो जो रीजनल स्टूडेंट है वो ना पंजाब में बचा है, ना हरियाणा में बचा है, ना यूपी में और ना उत्तराखंड में, एटलीस्ट हमारे एरियाज में तो ये बहुत बड़ी इशू है। एक तरफ हम बोल रहे हैं कि हमारा मैन फोर्स, वी आर द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, एंड सेकेंडली हमारे पास अवेलेबल नहीं है स्टूडेंट्स। तो ये जो गैप है बिकॉज ऑफ द इनसिक्योरिटी, उनको लगता है कि हमारे पास अभी जो जॉब अपॉर्चुनिटीज है या एम्प्लॉयबिलिटी की अपॉर्चुनिटीज है वो बड़ी कम है ना। सो विल हैव टू सी द होलसम पिक्चर। Education policy we always welcome, this is okay, but yes, there are so many things which yet to be done कि उनको एक ecosystem ऐसा create करना कि उनको sense of एक confirmation रहे कि yes, once we do this kind of qualification, ये हमारा कुछ ना कुछ होने वाला, we'll be getting to get employable, whether this is a job employment or it is a entrepreneurship or it could be higher education, anything. So इसको ecosystem create करने में I mean you can better answer it like what are we supposed to do as an academician or as a government or as a so that ये रिवर्सल लाना बहुत जरूरी है। I think it is we are in a very at a threshold kind of stage. Yes, anybody will like to add? Is anyone? Okay. Two aspects to this issue raised by Sunil sir. सर सबसे पहले तो जो आपने कहा कि क्या 14-15 साल का बच्चा इतना मैच्योर है कि वो अंडरस्टैंड कर पाए उसने लाइफ में क्या करना है? यस सर। इसका सर एक सी if you look at the new education policy, why I am insisting on new education policy again and again for two reasons.
सर इसमें इतने ज्यादा एंट्री और एग्जिट ऑप्शंस दे दिए गए हैं, इतनी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दे दी गई है, अगर पेरेंट प्रेशर के साथ बच्चा एक्स स्ट्रीम में चला भी जाता है and he wants to switch after every semester, he is free to do it. He will continue to get whatever are the credits or the scores he has got in a separate window that is known as the DigiLocker. उसके सारे क्रेडिट्स एकेडमिक बैंक, जैसे हमारा फाइनेंशियल बैंक होता है उसी तरह एक एकेडमिक बैंक बना दिया, उसमें आप पैसे डालते रहिए, अपने डिग्रीज डालते रहिए, डिप्लोमास डालते रहिए। जब आपको लगेगा आज से 5 साल बाद कि यार ये कोर्स मैंने तब किया था, इसको मैं आगे अब आगे करना चाहता हूं, एंड आई वांट टू स्टार्ट फ्रॉम sorry, move from polytechnic to a degree, whatever subject you studied at polytechnic will be used to shift to degree. Then you say नहीं ये मैंने समझ बहुत अच्छे किए थे पर मैंने डिग्री नहीं करनी, मैंने एमबीए करनी है, and in this I have studied following papers of industrial engineering. So that those credits will get transferred there also. So sir, age 18 years or 15 years or 16 years do not matter that much. Why? Because rather than making him unemployable, we are imparting him multiple skills. इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है सर, जो हम इसको अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे। अगर मेरे पास मल्टीपल स्किल्स हैं और इंडस्ट्री में उतार चढ़ाव आता है, आई कैन रीपोजिशन माई सेल्फ, आई कैन चेंज माई स्ट्रीम। अब देखिए आज से 5-7 साल पहले कितना बूम था कंप्यूटर साइंस का, कितना बूम था, एवरीबॉडी वांटेड कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर। पिछले 2-3 साल से क्या हो गया, वो बूम थोड़ा सा नीचे आके कोडिफिकेशन की तरफ चला गया, कोडिंग हैज बिकम। और एक मोटी मोटी बात सर, प्लीज रिमेंबर, कोई भी बिजनेस हो, किसी भी तरह का बिजनेस हो, बैकग्राउंड में हमेशा ब्रिक एंड मोटार ही रहेगा, मैन्युफैक्चरिंग ही बेस रहेगा। खाना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खाना प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किताबें नहीं बना पाएगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल नॉट बी एबल टू प्रोवाइड यू द बेसिक बिल्डिंग्स, कंस्ट्रक्शन। उसके लिए तो आपको सिविल इंजीनियर ही चाहिए। यस, artificial intelligence computers can help you draw a sketch drawing, but sir manufacturing और construction तो civil engineer और electrical engineer और mechanical engineer ही करेंगे। So there is no way you will be able to move away from the basic lines of business. ये मेरा एक बेसिक फिलॉसफी है। दूसरा, सर ने एक क्वेश्चन बड़ा रेज किया, बहुत अच्छा क्वेश्चन रेज किया कि हमारा अपना स्टूडेंट तो कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में जा रहा है, और हमारे पास जो स्टूडेंट यहाँ पंजाब हरियाणा में आ रहा है वो तो या तो ईस्टर्न यूपी से या बिहार से या नेपाल से या नॉर्थ ईस्ट से आ रहा है। उसके दो रीजन सर, एक तो इस एरिया का एजुकेशनल सिस्टम इन प्रीवियस टाइम्स हैज बीन मच बेटर देन इन सम अदर प्लेसेस, और ये रूल ऑफ लॉ है सर कि हमेशा बच्चा अच्छी जगह पे पढ़ने जाना चाहता है। आज से नहीं, शुरू से ही। आज से 30 साल पहले नॉर्थ के बच्चे अमेरिका, इंग्लैंड में इंजीनियरिंग मैनेजमेंट करने जाते थे। देन सेकंड जनरेशन आ गई, दे स्टार्टेड गोइंग टू कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। Why? Because America has become very expensive, UK has become very expensive, very choosy in selecting students. Canada, Australia have large education system, lesser number of students of their own, they invite more people. How will you invite them? You invite them by offering him certain job permits कि भैया 18 महीने पढ़ो, 18 महीने नौकरी करो। That is the type of scenario. Why? Because at the back of the whole, my purpose is to strengthen their education system, right? To strengthen their manufacturing system. अब आप कहीं भी चले जाइए, most of the transportation is in the hands of Punjabis and Haryanvis. Now, same type of job in India we consider menial, below our dignity. But the same type of jobs are so well rewarding, so well paying in these countries that we don't mind doing it. Right? So, sir, ये जो रिवर्स मोबिलिटी और मोबिलिटी है, ये तो जनरेशन से चलती आई है और चलती रहेगी। नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट यहाँ क्यों आ रहे हैं? देयर इज अ गवर्नमेंट सपोर्ट, और अगर आप इसको बड़े ध्यान से आइडेंटिफाई करें ना,
In last 7-8 years, it has tremendously increased. Why? Because there is an underlying philosophy of the government that the Northeast students should be mixed up with the national students, so that they also appreciate the other part of the country. That is why so many scholarships and fellowships for our Kashmiri students, brothers, sisters, Northeast students, because they want them to come to the mainstream and understand how the rest of the India is growing. So that is one reason. Second reason, what I can possibly think of is because these countries also, these regions of the country have not developed their education system to the level to which North India education system has developed. अब आप अपनी एज ग्रुप में ले लीजिए, आपके बहुत सारे बच्चे फ्रेंड्स जो आपकी एज ग्रुप के होंगे, बहुत सारे बेंगलोर में इंजीनियरिंग करने जाते होंगे. Till 2000s, before engineering started in a big boom in North India, North Indian students used to go to Bangalore and Chennai and Manipal for higher education. Now that number has reduced. Why? Because some good quality engineering institutions and polytechnics have started in this region. So, sir, ये mobility तो हमेशा, and it's good for the country also, because once you move out of your comfort zone, studies, you become self-reliant. कितना जबरदस्त impact student की personal growth पे होता है सर, जब आप hostel में रह के आप self management करते हैं. So I think I will always take it from a positive perspective. It is not that our students are going to Canada only for jobs. Please understand, at the back of the mind, they are also bringing foreign currency to us. They are also bringing newer ways of doing things. But इसमें catch सर ये है कि जो अगर आप local students को study करें ना जी, पिछले कुछ सालों में, पिछले 2-3 सालों में स्पेशली, तो जो overseas जा रहे हैं वो mostly illegal route से जा रहे हैं, और वो बच्चे शायद किसी न किसी तरीके से सिर्फ पहुंचना चाहते हैं. I think education उसमें purpose all will बहुत ही कम है कि उसमें academic purpose उसके पीछे नजर आ रहा है, जो वो percentage बहुत कम है. Sir, agree. I accept your logic. 1.6 lakh students went to Canada and Australia for last year for education, higher education. Higher education means after diploma. That is why this एक तो common philosophy होती है, हर किसी से, they never ask you आपकी health क्या है, they just say what is your band, है ना, IELTS का band क्या है ना, that's the norm, the way students behave. But sir, I think when you are talking of a base of 26-27 lakh students, out of them if even 1 lakh goes out, it is not a very huge sum of, yes. They go from good families, they sell off their land to finance their education. That's the little bad. But I think these are transition things. Earlier people used to go to Bangalore. Now it is easier to go to Canada than to go to Bangalore. So I don't think job scenes have changed over a period of time. But anyway, yes. Any other comments, please? Yes, there was another comment by, yes, ma'am, Ratinder, ma'am. Now you can. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Any questions you have, you can put it in the chat box. Our students are very intelligent at government polytechnic, but cannot afford government fees. Students move to private colleges only to get diploma certificates with less fee. Is it that scenario? I don't think. I don't think government fees is that high. No, maybe Ratinder ma'am in your area it may be, but I don't think. Whatever little knowledge I have, government polytechnics are fairly well subsidized. Am I right? सभी जगह sir, Punjab में भी government is putting a lot of money to sponsor polytechnics, and lot of scholarships and lot of free ships and lot of 1 month के rent में 6 महीने की education मिलती है. जी सर. हरियाणा में तो शायद 3-3.5 हजार रुपए फी है. We have a girl education free in Haryana. 1 month का रेंट भी ज्यादा होता है. It's very less. Fee is not a criteria. जी सर. जैसे हमारे मोस्टली इंडिया में आ जाते हैं, हम जो स्ट्रीम चूज करते हैं वो 10th क्लास के बाद करते हैं, लाइक बीएससी बोर्ड स्टेट, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स. तो ज्यादातर ये देखा गया है कि जितने क्रीम स्टूडेंट होते हैं सोसाइटी में वो पीसीएम या पीसीबी की तरफ जाते हैं, देन कॉमर्स, मतलब स्पेशली इन गवर्नमेंट स्कूल, एंड देन ह्यूमैनिटीज में सर जनरली ऐसा है कि 5-10% ऐसे होंगे जिन्हें ह्यूमैनिटीज में जाना होगा, अदरवाइज जिन्हें साइंस नहीं मिली तो ह्यूमैनिटीज में जाते हैं. तो ये बहुत देखा कि इम्बैलेंस बहुत ज्यादा है कि सारे क्रीमी स्टूडेंट पीसीएम आईआईटी, तभी तो आईआईटी सिविल सर्विसेज भी निकालते हैं, बैंकिंग में भी होते हैं, इंजीनियर. तो ऐसा ही उसकी वजह से सर ऐसे होता है कि डिप्लोमा में भी बहुत ऐसे स्टूडेंट आ रहे हैं जो डिग्री अफोर्ड नहीं कर पाते हैं या फिर उनका वो लेवल नहीं होता है.
तो उन्हें पढ़ाने में एक तो वो प्रॉब्लम फेस करते हैं, उनका लेवल बहुत हमें बेसिक से उठाना पड़ता है 10th लेवल से। तो दोस्तों सर कैसे हम सोसाइटी को बैलेंस करें कि लाइक ह्यूमैनिटीज और वो भी अपने पैशन के हिसाब से चल सके। नहीं तो सोसाइटी में ये है कि सर पेरेंट्स ही बताते हैं कि हमारा बच्चा साइंस में है और चुपके से बताते हैं कि हाँ वो आर्ट्स से कर रहा है। अब थोड़ा सा चेंज हुआ है बट नॉट दैट मच, ऐसा मुझे लगता है। सर देखिए, जॉब सिनेरियो और एजुकेशन सिस्टम बहुत सारा पेरेंट प्रेशर और पीयर प्रेशर से चलता है। मेरे दोस्त ने इंजीनियरिंग करनी है तो मैं भी इंजीनियरिंग करूंगा, भेड़ चाल। सर जो सर की बात थी, 14-15 years old kid is not mature enough to understand himself, that is partially true, especially in Indian scenario. मुझे ये लग रहा है कि जैसे जैसे फ्लेक्सिबिलिटी सिस्टम में आ रही है ना, पहले क्या होता था कि इंजीनियरिंग या मेडिसिन और कुछ नहीं। जब आप स्टूडेंट थे शायद ही कोई फाइन आर्ट्स में जाता था, शायद ही कोई ड्रेस डिजाइनिंग में जाता था। बट लुक एट नाउ द क्राउड फॉर निफ्ट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, 3,000 स्टूडेंट एक सीट के लिए, ऑलमोस्ट एट पार विद आईआईटी। सो ग्रेजुअली शिफ्टिंग तो हुई ना, मान रहे हैं ना। पहले क्या होता था, टिपिकली इन दिस नॉर्थ बेल्ट, पंजाब एंड हरियाणा, students from rural background used to have only one focus: I want to serve my motherland, army. ठीक है। अब वो क्या हो गया, जो इतना पैशन है ना वो अब रूरल एरिया में नहीं, अब शहरों में भी शुरू हो गया। लास्ट संडे को हमारे सीडीएस का एग्जाम हुआ चंडीगढ़ में, मैं कोऑर्डिनेटर, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज +2। सर 8,000 स्टूडेंट्स अपीयर्ड फ्रॉम चंडीगढ़। देयर वाज अ टाइम व्हेन 2,200 होते थे। सो थिंग्स आर गेटिंग चेंज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। कोई जमाना था बीकॉम को बेकाम कहते थे, अरे छड़ यार बीकॉम, कहीं और नहीं एडमिशन मिली, तब बीकॉम कर रहा है। टुडे इट इज वन ऑफ द प्राइज कोर्सेस। तो सर ये जो मार्केट डायनामिक्स है ना, जो डेमोग्राफिक्स हैं, ये पीरियड के साथ चेंज होते रहते हैं। उसी हिसाब से आपका एजुकेशन सिस्टम भी चेंज होना चाहिए। हाँ, पॉलिटेक्निक में इतना ज्यादा चेंज नहीं आया, मुझे मालूम, क्योंकि आपके साथ, जैसे आप के साथ इंटरेक्ट कर रहा हूं मैं, पिछले 10-12 साल से पॉलिटेक्निक में इंटरेक्ट करता रहा, काफी ज्यादा इंटरेक्ट करता रहा। इसका मेजर रीजन हमें भी थोड़ा सा ब्लेम लेना पड़ेगा। हम में से कितने ऐसे हैं 40 घंटे, 40 to 50 आवर्स आर दी वन पेपर ऑन एन एवरेज, 13 हफ्ते का कोर्स, यही है ना आपका भी? मैं तो पंजाब की बात करूं तो आपका भी वही होगा, 13 से 15 हफ्ते का सेमेस्टर, और है ना 16 weeks. 48 to 54 सेशंस, 6 घंटे का उनका एग्जामिनेशन एंड ऑल दैट स्टफ, प्रेजेंटेशन, है ना। अब आप बताइए 48 घंटे में से क्या आप उनके साथ 2 घंटे भी उनके कैरियर के बारे में बात करते हैं? एक टीचर बता दीजिए आप में से, कोई नहीं करता। We do not share with them our own experience. Yes, we teach them A to Z, everything about the subject. So कहीं ना कहीं हमारी अपनी ही ओरिएंटेशन टीचिंग से हट नहीं रही, मेंटरिंग की तरफ जा ही नहीं रही। कहीं पर भी हम स्टूडेंट्स की हैंड होल्डिंग नहीं कर रहे। क्यों? यार मेरा काम थोड़ा है, हमारा काउंसलर है ना, वो करेगा। और काउंसलिंग का सेशन हमेशा कंसिडर ट्यूटोरियल कंसिडर किया जाता है। फ्री टाइम है जी, घूमो जी, क्वेश्चन हो तो आ जाना मेरे पास। हाउ मेनी ऑफ अस यूज टीएफपी, ट्यूटोरियल और प्रैक्टिकल्स? यही होता ना आपका भी, नॉमेनक्लेचर नाम कुछ भी, ट्यूटोरियल के नाम से आप होता है ना सेशन। 3+1 चलता है ना आपका भी, हरियाणा में भी 3+1। क्या हम ट्यूटोरियल में कभी ऐसी बातें करते हैं? एक बता दीजिए। सो समवेयर डाउन द लाइन वी नीड टू चेंज आवरसेल्व्स, आवर एटीट्यूड टुवर्ड्स आवर स्टूडेंट्स। और एक और बात सर, आप मानिए, जो अच्छे पॉलिटेक्निक्स हैं उनकी अभी भी सारी सीटें भर जाती हैं। जो अच्छे पॉलिटेक्निक्स हैं, स्टूडेंट इज रेडी टू कॉम्प्रोमाइज ऑन द ब्रांच टू गेट एडमिशन इनटू अ गुड पॉलिटेक्निक। आपके बिल्कुल पड़ोस में है, आप चंडीगढ़ में से आप देखिए, 11 सेक्टर का आईटीआई डिप्लोमा, सीसीईटी का डिप्लोमा बैंक, 8-10 हजार एप्लीकेशन आती हैं 300 सीटों के लिए। So that means kids are ready to do if there is proper educational environment.
An educational environment does not consist of principal or head, consists of teachers. तो सर यस, आपकी बात बिल्कुल ठीक है. एक ऐसा हमारा एक इमेज ऐसा बन चुका है कि पॉलिटेक्निक में सिर्फ एक पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी वाले बच्चे ही आएंगे. उसका मेरे पास तो कोई सोल्यूशन नहीं है, बट मुझे जो लग रहा है कि ग्रेजुअली इफ दीज स्टूडेंट्स आर मेड टू कम बैक टू एजुकेशन आफ्टर 2-3 years to convert this diploma into a degree, lateral entry gets through, I think things will change. But otherwise, this is a societal problem, and societal solution only can happen. It cannot happen through discussion. Yes, there is another question. Ratindra madam again says most of our lower middle class students opt for diploma. That's true, ma'am. But then Krishan Kumar ji says distance learning is not considered for government jobs. ऐसा होता है? अच्छा, I have no idea, sir, Krishan ji, on this aspect. I really don't. I really don't know. I will not like to comment on something which I don't know. Yes, sir. Any other comments, please? Even engineering through distance learning is not allowed. Yes. Sir, as we discussed, कि एक new Sir, policy little louder because people are online also. Yes. ये 70-20-10 जो न्यू पॉलिसी आने वाली है, मोस्टली ये इसलिए आ रही है क्योंकि स्किल बेस्ड हम एजुकेशन को बनाना चाहते हैं, एम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ाना चाहते हैं. लेकिन लास्ट कुछ ईयर्स में स्पेशली कोविड के बाद इस टाइप के काफी प्लेटफॉर्म्स रहे हैं. फॉर एग्जांपल अपग्रेड अप स्किल, जो कि इस टाइप के कोर्सेज ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहा है. तो क्या हमारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने इसका कोई एनालिसिस किया है कि वो कितने एम्प्लॉयबल रहे हैं इस इन कोर्सेज के बाद? सर आप बिल्कुल जायज क्वेश्चन है आपका और एनालिसिस करना चाहिए हमें. सर दो चीजें अब आप अपने आप ही देखिए. हाउ मेनी ऑफ अस वर कंफर्टेबल टू टेक क्लासेस ऑनलाइन बिफोर 20th of March 2020? किसी ने कभी कोई ऑनलाइन क्लास ली? नहीं ली. हमें तो क्योंकि हमें तो लेनी पड़ती है. वी वर ट्रेन्ड सिंस 2014 टू डू इट, बट अदरवाइज none of us have. कितनी जल्दी हमने अपने आप को अडॉप्ट कर लिया, है ना? I distinctly remember there was an order of the Haryana State Technical Education Board. I think around 15th of May you started taking classes online. हमारा ऑर्डर की कॉपी आती है ना, तो पंजाब में भी ऐसे. So that means 1.5 महीने में हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट हो गए. हमने वेबएक्स सीखा, जूम सीखा, जो मर्जी प्लेटफॉर्म यूज किया. वेबएक्स करवाया था, जूम तो बंद करवा दिया था गवर्नमेंट ने. सो दैट मींस इतनी ज्यादा रिजिलियंस है हमारे एजुकेशन सिस्टम में कि हम प्लेटफॉर्म भी चेंज कर लेते हैं. We gradually shifted from blackboard into online mode, PPTs बनाई, जो मर्जी, whatever efforts. तभी तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा था ना कि 2 हीरोज हैं इसमें, एक तो मेडिकल एंड सेकंड टीचर्स. He said these two are the real nation builders because they provide, one provides the psychological support, another provides the physical support. So anyway, तभी तो ये हो पाया. It is the resilience of our education system. Sir, on 20th of March we imported 2 lakh PPE kits. By 15th of April we started exporting 50,000 PPE kits per day. और प्लीज रिमेंबर सब कुछ बंद था. स्टिल वी प्रोड्यूस्ड PPE kits for the global market. 200 crore plus vials of the serum, the COVID vaccine we exported. So please look at what is the backbone of all these things. Backbone is our education system, which provides such trained manpower that they can immediately go to the field and do it. Please don't underestimate your contribution. If the nation looks at you, you are the first ones to provide this support. Any idea how many polytechnics are produced every year? Any rough idea? 17 lakh. 17 लाख बच्चा पॉलिटेक्निक से निकलता है हर साल, और इंजीनियरिंग में से 12 लाख.
और उन 12 लाख में से भी 4.5 लाख ऑर्गेनाइज सेक्टर जॉब में जाता है, 1.5 लाख हायर एजुकेशन में जाता है, बाकी बचता क्या है? See the difference. 17 lakh students which you produce directly go into the field and do the production. और 12-13 लाख जो इंजीनियरिंग में से निकलता है, उनमें से 4 से 5 लाख ही जॉब में जाता है. So who is the real nation builder? Don't underestimate your, not my figures, sir. ये तो प्लानिंग कमीशन की फिगर्स हैं. पढ़ लीजिए नेट में. रिस्ट्रक्चरिंग पॉलिटेक्निक एजुकेशन इन इंडिया, इस नाम से एक मैनुअल है, वेबसाइट पे आप देख लीजिए ये सारी फिगर्स. Yes, we have to make these students understand the latest skills required in the industry. सर एक छोटी सी बात छोटी, ये हैंडसेट है ना, ये हैंडसेट आपको क्या लग रहा है कोई इंजीनियर कर रिपेयर कर पाएगा? नो, माय पॉलिटेक्निक बॉय विल बी एबल टू. मेरा जो मैकेनिकल का पॉलिटेक्निक बॉय है ना, गाड़ी की आवाज से बता देगा सर इसमें क्रैंकशाफ्ट हिला हुआ है. इंजीनियरिंग का ऑटोमोबाइल इंजीनियर विल नॉट बी एबल टू डू इट because they are attuned, trained for some other thinking. They look at blue collar jobs, whereas my polytechnic looks at the job scenario. That's the difference. Onus lies on us to teach him dignity of labor. उसके दिमाग में ये डालना पड़ेगा, भाई यू आर द पिवट. जो हम कहीं ना कहीं फेल हो गए, हम उसको यही बता रहे हैं कि भैया तू वेल्डर बनेगा. We need to upgrade him to start thinking of as a cog, main aspect of it. This is where the polytechnic education and polytechnic teachers play a role. जब हमारे ही माइंड में ये होगा कि पॉलिटेक्निक्स आर सेकंड ग्रेड टू इंजीनियरिंग, सर बच्चे के माइंड में भी तो वही आएगा. बताइए मैं कहां गलत हूं? You have to impart him that skills so that he gradually moves. सर देखिए, अगर मैं 0 से 10 तक जा रहा हूं और कोई बच्चा 8 से 10 तक जा रहा है, बताइए किसकी ग्रोथ ज्यादा स्टुपेंडस है? That is where. So again coming back to your question, sir, it is not 70-20-10. That is just a number. That is just a number. The real challenge is my student well trained, experienced, mature enough to understand what 70 will be and what 10 will be? प्रॉब्लम वो है सर. प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये रेशो क्या होनी चाहिए. प्रॉब्लम ये है कि क्या बच्चा अपने आप ये डिसाइड कर पा रहा है कि वो क्या चाहता है. That to me is yes sir. मेरा क्वेश्चन था, जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, स्किल डेवलपमेंट में हो गया, जॉब ओरिएंटेशन के लिए हो गया, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हो गया, ठीक है, क्या इसमें मोरल और एथिकल वैल्यूज को भी बढ़ावा दिया जा रहा है? अगर है तो कैसे बढ़ावा दे रहा है, इस चीज को कैसे प्रमोट कर रहा है? क्योंकि डेली लाइफ में ये चीजें देखने को बड़े कम मिलेंगी. कोई किसी रेस्पेक्ट करना सीख रहा है या रेस्पेक्ट बड़े रूट तरीके से कर रहा है. क्लास में बैठ रहे हो तो टेबल पे पैर रख के बैठ जा रहे बच्चे, जो भी देखना भी पड़े कॉलेज में, हर कॉलेज में. जी. तो क्या ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी इसको भी प्रमोट कर रही है किसी एंगल? सर न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो अगर आप प्रीएम्बल पढ़े ना, फर्स्ट लाइन, 2 वर्ड्स बड़े हाईलाइट हैं. एक तो है होलिस्टिक एजुकेशन, होलिस्टिक, HOLISTA, होलिस्टिक ओवरऑल. And second है human value systems. In fact, in engineering, it is now mandatory to have 2 weeks of induction program on human value systems. मुझे नहीं मालूम डिप्लोमा होल्ड में है कि नहीं है. सर हो गया? हो गया. प्रोफेसर रजनीश अरोड़ा committee is there, which last 2 years back and made it mandatory in all AICTE institutions. 2 weeks of induction program, including a capsule of around, I think, 20 hours on human value systems.
सो आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आपका एथिकल ओरिएंटेशन क्या होना चाहिए, आपकी मॉरल ड्यूटीज क्या हैं। हर इंडस्ट्री का एक अपना रोल एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है, उसका क्या रोल है, आपको कितना नॉलेज सिस्टम होना चाहिए, रिगार्ड सिस्टम कैसा होना चाहिए, पेमेंट टर्म्स कैसी होनी चाहिए, ऑल दोस थिंग्स कम अंडर ह्यूमन वैल्यू इंटरफेस, ह्यूमन वैल्यू सिस्टम। एसीटी का जो मॉडल करिकुलम आया उसमें भी ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड है। जी सर, हाँ वही मैं कह रहा हूँ, 20 घंटे का है सर। सो ये फर्स्ट 2 वीक्स में ना सर इंडक्शन प्रोग्राम अब मैंडेटरी हो गया है। अब मुझे नहीं मालूम कि आपके इंस्टीट्यूशन में हुआ कि नहीं, बट आई थिंक दिस इज नाउ द नॉर्म ऑफ एआईसी। जो हमारा नया करिकुलम है हरियाणा में भी जो 23 से इंप्लीमेंट हो रहा है उसमें सब चीजें इनकॉर्पोरेटेड। जी सर, ये 21 में प्रपोज किया था प्रोफेसर रजनीश अरोड़ा जी की कमेटी थी, बहुत हाई पावर्ड कमेटी थी। तो देयर रिकमेंडेशंस हैव बीन एक्सेप्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड नाउ इट इज मैंडेटरी नॉट ओनली in engineering or in polytechnic, it is mandatory in all fields. Even if you want to take admission in the commerce or in you need to study this aspect. Okay, any other comments please? Okay, so yes sir, any comment from my online participants? 50 of them. Yes, hello. Yes Aditya ma'am. Okay, fine. Okay, so I'll skip because I have a long presentation. I'm leaving my presentation with the organizers maybe. So I'll skip few of them. I'll skip. I'll come to what is your real role, and I need your guidance on this. Just look at this PPT. एक तरफ तो सोसाइटी में बहुत सारी inequalities हैं, lot of inequalities are there, social, demographic, economic. That's one. And then there is a second type of a divide, which is the knowledge divide. Do you know only 22% of the students who do matriculation end up doing graduation? कितना ज्यादा ड्रॉप आउट रेट है 10वीं करने और बीए करने के बीच में, मास्टर्स का बैचलर्स करने के बीच में. Almost 80% of the students are not able to complete their graduation. और अगर आप इसको लीजिए ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को स्कूल एजुकेशन से लीजिए तो और भी कम है, because there are dropouts at 8th, there are dropouts at 10th, there are dropouts at 12th, like this. Is this dropout only because these people are so economically back that they want to do the job? क्या ये सिर्फ वही बच्चे हैं जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे एजुकेशन, या कोई और भी है? When there is so much of scholarship and benefit, economic cannot be the only reason why dropouts are there. तो दूसरा रीजन क्या हो सकता है? दूसरा रीजन ये हो सकता है कि रेलेवेंस ऑफ एजुकेशन इतनी कम है, उनको लगता है यार पढ़ने का फायदा क्या? राइट मैम, उनको लग रहा है क्या फायदा पढ़ने का, इसे नौकरी तो मिलनी नहीं, इससे अच्छा 10वीं के बाद ही नौकरी कर लो. So here also I will like to put blame on you and me. सिलेबस बनाने वाले भी हम, पढ़ाने वाले भी हम, और तो कोई रीजन नहीं हो सकता ना सर. सिलेबस मैं बना रहा हूं, इंप्लीमेंट आप कर रहे हो, हम दोनों ही गलत है. Otherwise there cannot be a third explanation for such inequality in the knowledge divide. बच्चा इंटेलिजेंट है, but he is not having the formal education. And it is for this very purpose that Skill India mission has been there. आपको आपने पढ़ा होगा पॉलिटेक्निक में एक NSQF आया है, आपने देखा सर, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क. Does anybody know about it? NSQF, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, NSQF. ये बड़ा इंपॉर्टेंट 2016 में आया, 2015. NSQF, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क. क्या है ये? It says if you have some skills, like a plumber है, इतनी अच्छी तरह से उसको आता है कि हमारा इंजीनियरिंग का बच्चा भी वैसे अच्छे से नहीं कर सकता, हमारा पॉलिटेक्निक का बच्चा भी इतनी अच्छी तरह से कर, पर उसने कभी फॉर्मल एजुकेशन किया ही नहीं,
तो 8वीं 10वीं के बाद छोड़ दिया उसने. Now, government says if we can bring these people into the formal education system and start grading him, कि उसका लेवल 7 तक पहुंच गया, जो बच्चा मेरा 7 सेमेस्टर पढ़ने के बाद इस लेवल तक पहुंचेगा, ये आदमी जो एजुकेशन सिस्टम से नहीं है, उस लेवल तक की इसमें स्किल्स हुनर है. तो गवर्नमेंट लॉन्च्ड अ स्कीम बाय द नेम ऑफ हुनर से रोजगार. शायद आपने पढ़ी भी होगी, आपके पॉलिटेक्निक में भी शायद लॉन्च होगा. हुनर से रोजगार स्कीम. To bring those people who have skills into the education, so that we award him some degree or diploma. आप कहेंगे इसका क्या फायदा, उसको क्या लेना, वो तो फर्स्ट क्लास प्लम्बिंग कर रहा है, वो आपके सर्टिफिकेट से उसको क्या लेना. प्लीज अंडरस्टैंड, this helps him grow psychologically. Second, he can be wonderful in international markets. अभी गवर्नमेंट ने पिछले साल एक कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, COWIT फुल फॉर्म मुझे नहीं मालूम, देख लेना, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की ट्रेनिंग और उनकी ग्रेडिंग के लिए एक कोर्स, एक वो प्रोग्राम शुरू किया, वेयर गवर्नमेंट गिव्स 6,000 rupees पर construction worker, so that his style of doing the construction masonry work is as per global norms, global standards. आप और मैं सोचेंगे इसका क्या फायदा. Please remember, when there is mobility of people, mobility of skills, these very plumbers, these very masons, carpenters will have an international market. Why they are not able to do well outside is because they do not have that international certification. So जो सर की बात थी कि you have to have multiple solutions to the same problem. You cannot only say education system will be able to do it. There are large number of people who are having skills, who have a knowledge, but do not have a to bring them to the mainstream. That such schemes are there. Hence, I drafted this particular PPT, that these growing inequalities in turn contribute towards the knowledge divide, and knowledge divide in turn contributes to the inequality in the system. Yes, any comments, please? See, I have been doing most of the talking. It's an interactive session, please. Yes, sir. Anyone? Yes, sir. Anyone online would like to add anything? Any questions, any comments, sir? Okay. Okay. If there are no comments, I'll move to the next one. This is my last PPT, and I think you will appreciate it. And herein is our role, both this side and that side. I will start with an example. Till 1990s, and simple MBBS degree was sufficient to land you a good, decent job. Around 2000, MBBS degree was not considered sufficient. आपको कुछ और भी पढ़ना चाहिए. So people started doing MD, MS, masters करनी शुरू कर. Bachelor in medicine से masters in medicine. 2010-12 में सुपर स्पेशलाइजेशन आ गई. MS सफिशिएंट नहीं है अब सर. मास्टर ऑफ सर्जरी सफिशिएंट नहीं है. If you want to be a neurosurgeon, you must be MCH in neurosurgery. सर क्या 1990 से पहले न्यूरोसर्जरी नहीं होती थी? होती थी ना. तो कौन करता था उसको? MBBS करता था. क्या 2000 से पहले न्यूरोसर्जरी नहीं होती थी? कौन करता था? MS करता था. अब 2010-12 से MS न्यूरो सर्जरी हो गई. And is this the end? No.
नेक्स्ट स्टेज आ गई. यू एंड हार्ट सर्जन, उसमें भी स्पेशलाइजेशन आ गई. हार्ट सर्जरी, बलून थेरेपी, endoscopy. So as skills are becoming more and more specialized, पहले एमएससी बॉटनी होती थी, फिर एमएससी बॉटनी का एक सब कंपोनेंट हो गया बायोटेक्नोलॉजी. बायोटेक्नोलॉजी बहुत अच्छी रही, अब उसकी भी आगे आगे नैनो बायोटेक्नोलॉजी. So as skills are becoming more and more specialized, need for specialists also increases. सही कह रहा हूं. एक तरफ हम कह रहे हैं डाइकोटमी होगी ना, एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि जनरलाइज्ड एजुकेशन होनी चाहिए और दूसरी तरफ हम कह रहे हैं सुपर स्पेशलिस्ट होना चाहिए. तो हाउ टू फाइंड आउट द राइट मिक्स? सेकंड, skills are highly degradable. Highly degradable. आज से 20 साल पहले there was an iconic company in Haryana, HMT Pinjore. सही कह रहा हूं ना सर? जी सर. 50,000 plus workers were there in Pinjore. 50,000. Best quality watches. Best quality watches HMT. Best quality tractors HMT. Zetor के नाम थे. But what was the problem? It was mechanical. हाथ से चाबी देनी पड़ती थी घड़ी में. Who wears a mechanical watch now? So they did not change with the time. Hence they were out. सबसे पहला हैंडसेट इंडिया में पनवायर ने बनाया था, पंजाब वायरलेस. आज के जनरेशन को पूछो, पनवायर के स्पेलिंग भी नहीं पता होंगे उसको. ठीक है. एक सिंपल हैंडसेट ले लीजिए सर. इसके कारण अब कोडक की कोई फिल्में नहीं बिकती. कोडक फिल्म बनाता था जिसके ऊपर आप फोटो डेवलप करते थे. When was the last time you developed a photograph? डेवलप ही नहीं कराई होगी. आजकल तो मैरिज फिल्म फोटोग्राफ्स भी नहीं डेवलप होती, वो भी सीडी में आती हैं. आजकल सीडीज भी खत्म हो गई, गूगल ड्राइव पे पड़ी है. इसके कारण कैलकुलेटर खत्म हो गए. इसके कारण घड़ियां बिकनी बंद हो गई. एक क्या हैंडसेट आया, 17-18 इंडस्ट्रीज बंद हो गई. फैक्स मशीन आपको फैक्स ही नहीं करता. आप में से किसने कभी म्यूजिक सिस्टम खरीदा ही नहीं होगा, है ना? There was a time when you used to buy an LP. There was a time when you used to buy a DVD, when you used to buy cassettes. Why these companies failed? Because they did not change with the time. अगर सर इंडस्ट्री इतनी बड़ी बड़ी 30 मार्का इंडस्ट्रीज खत्म हो गई, should we in education not change ourselves? हम वही पढ़ाते रहेंगे जो सीडी के एज के हैं. No? Sorry, I'm hurting you. मुझे मालूम है I'm hurting you. But fact is like this. We don't change. Why? Because why should I change? मेरा तो काम चल रहा है. No. Please remember, skills are always experiential. Textbook knowledge has some meaning, but it is the experience which is more important. Bring the real world into the classroom. Real world into the classroom. कि भाई ऐसा दुनिया में बिजनेस चल रहा है, ऐसे प्रोडक्शन हो रही है. And that is only possible if my teachers are themselves trained. If my teachers have that industrial exposure. Simply because I have done my B.Tech and M.Tech and whatnot is not sufficient now. You need to have your own industrial exposure. Look at how industry is functioning. And last,
skills are always generational. जो आपके लिए relevant है आपके बच्चे के लिए वो relevant नहीं होगा. जो मेरे लिए relevant है मेरे बच्चे के लिए तो है ही नहीं वो relevant. Why? Because different generations are there. Their requirements are totally different from mine. So, my last comments. If you look at all these things, there is one underlying common factor. That is, you need to partner. You need to work together. Best practices in, say, Sirsa plant, Sirsa Polytechnic should be imbibed by the Ambala Polytechnic, should be imbibed by Yamuna Polytechnic and whatnot. And it is these workshops which will provide you that. Okay, friends, I'll stop here. Thank you, friends. Sorry, I did not give you sufficient time to interact. I was more into delivering monologue, but yes, any comments by any of my participants, either online or offline? Yes, sir. Any comments? Any? Yes, sir. We still have 5 minutes. Yeah. सर हमें पता कैसे चलेगा कि अब हमारा टाइम आ गया चेंज होने का? Sir, either you change yourself or no, wait. Or the circumstances will force you to change. एचएमटी के लोगों का जो साइकोलॉजी है, मतलब जैसे आपने एग्जांपल लिया कि उन्होंने मैकेनिकल वाचेस से क्वार्ट्स वाचेस की तरफ शिफ्ट नहीं करे, लेकिन वहां पे जो मतलब हायर पोस्ट पे भी लोग हैं जिनसे मैं इंटरेक्ट किया, जनरल मैनेजर ऑन द पीपल्स, वो कहते थे हमने क्वार्ट्स की तरफ शिफ्ट किया इसलिए हम बंद हो गए, क्योंकि हमारी स्ट्रेंथ मैकेनिकल वाचेस बनाने की थी, हमने दूसरों को कॉपी करने का कोशिश किया और हम फेल हो गए. मैकेनिकल वॉचेस आज भी मार्केट में है, अगर कोई बना सकता है तो एचएमटी ही बना सकती थी उस टाइम भी, अब भी किसी से ज्यादातर नहीं बन रही हैं. और जो स्विट्जरलैंड की अच्छी कंपनियां हैं उनकी मैकेनिकल वॉचेस आज भी बहुत महंगी बिक रही हैं. तो मैकेनिकल वॉचेस बुरा प्रोडक्ट नहीं था, बट हमने किसी और को कॉपी करने की कोशिश किया और हम फेल हो गए. सर दूसरा एचएमटी के फेल होने के कारण सरकार की पॉलिसीज भी है. नहीं, उनका मतलब कहने का कि जो आपकी स्ट्रेंथ है आप उस पे काम करो. पार्शली तो करेक्ट थे, बट एक निश क्रिएट नहीं किया ना. अगर उस लेवल तक स्विच तक जाता है तो आज शायद ये तुम्हें बंद नहीं आती. कि जो स्ट्रेंथ है, जो कोर स्ट्रेंथ है आपका, लाइक मेरा किसी सब्जेक्ट में कोर स्ट्रेंथ है, किसी का कोर स्ट्रेंथ है, उस पे तो आप डट के रहो. टाइम के साथ चेंज तो होना पड़ेगा सर. ई कॉमर्स जैसे बहुत सारा चेंज हो चुका है, डेफिनेटली टाइम के साथ तो चेंज होना ही पड़ेगा. वी हैव नो डाउट अबाउट इट. Sir, major reason for failure of HMT was that they themselves did not know what to do. वो तो ऊपर सर आप देखिए, 2 चीजें होती हैं बिजनेस में. या तो आप कॉस्ट लीडरशिप, इतने कम कीमत पे सेम प्रोडक्ट ऑफर करो, या एक यूनिक प्रोडक्ट ऑफर करो. फरारी गाड़ी 7 करोड़ की है. अगर वो सोचे कि मैं 2 लाख की मारुति के साथ कंपीट करूंगा तो कर ही नहीं पाएगी. और मारुति सोचे कि मैं 7 करोड़ की गाड़ी बना के फरारी से कंपीट करूंगा तो मैं कर नहीं पाऊंगा. So you have to find out where you are good at and focus only on that. HMT did not do that. Same with iPhone also. iPhone भी बिक ही रहा है मार्केट में और उसका बड़ा अच्छा कंपनी है. और उसी के साथ लावा है, माइक्रोमैक्स है. ये माइक्रो जो हमारे इंडियन काफी सारे मैन्युफैक्चरर थे जो आए और चले भी गए, अब दोबारा से मार्केट में एंटर कर रहे हैं. This program is till Friday. Friday. How many of you are in hostel? Okay. Thank you, friends. We can join back at 12:45, please. Thank you.